Dear students, welcome once again. Okay, so I hope everybody has been joined. Only 10 participants are there. So we are quickly starting the next segment of this chapter and the last topic of this class, that is DNA fingerprinting. Clear? So DNA fingerprinting is the last part of this chapter, that is molecular basis of inheritance. And in this DNA fingerprinting, we are going to know very minutely what is DNA fingerprinting, where it is done, why it is important, and how it is done. Yes. So to understand any topic, you need to understand the very basics, just a little bit of complexion behind that topic, which is going to help you in further understanding of this part. Clear? କୋଉ ବି topic ତମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, just ତାର level ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇକି ସେ topic ଟା ଯଦି ଦେଖିବ, you'll raise some 5 to 6 questions. Like if you are talking about DNA fingerprinting, then what is DNA fingerprinting? Who discovered this DNA fingerprinting? Where it is being used? When it is being used? Why it is being used? And how it is being done? So basically, these are the basic questions you need to ask to yourself, and then you will find out the answer, and then you will go from the past. Then, okay, so DNA fingerprinting, or also known as DNA profiling. See, so the man behind this entire success of DNA fingerprinting is Mr. Alex Jeffrey. Dear students, please remember this man. He is Mr. Alex Jeffrey, a scientist who has discovered this DNA profiling or DNA fingerprinting, and which is very crucial. That is बहुत importance होची our normal day-to-day life रे. Then, okay, so it is the technique of identify and the similarities and differences of the DNA fragments of two individuals. ठीक ଅଛି, दिटा individual का भितरे कोई जगह similarities अच्छी, कोई जगह dissimilarities अच्छी, how to identify the similarities and dissimilarities. A basis रे हमको सृष्टि करथिले, and this is developed by Alex Jeffrey in the year 1985. ठीक अछि, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनिबार बहुत पूर्वरु 5 वर्ष पूर्वरु 1985 रे एलेक्स जेफ्री ए प्रोसेस डिस्कवर करथिले. तो म ये भी किछि आइडिया देथिले केमति ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हबो, सीक्वेंसिंग केमति करा जेबो, व्हाट आर एसएनपी, व्हाट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, what are variable number tandem repeats, VNPR, each and everything a process to start with. The DNA fingerprinting, also called as DNA profiling, ଆମେ start କରୁଛେ ଆଉ ଏଇ chapter ରେ ତମେ first ଜାଣି ପାରିଲ what is DNA fingerprinting, କଣ ସେ process ଟି. I am repeating once again, it is the technique to identify the similarities and the differences of the DNA fragments of two individuals. ଦିଟା individual ଭିତରେ ବା among the individual कौन similarities अच्छी, कौन difference अच्छी, ताको identify करिबा, ताको चिन्हट करिबा, and से accordingly काम करिबाकू कौन हमें कहउछे DNA fingerprinting बोली कहउछे. Who discovered this technology? ए मेथड टा किए डिस्कवर करथिले, किए प्रथमे आइडेंटिफाई करी कहितले हमकू. The name of the scientist developed करथिले जे ताको ना होउछे Alex Jeffrey, and Alex Jeffrey is an American scientist. in 1985 रे हमकू प्रोसेस टी बुझितले. Next, ये DNA fingerprinting का basis कौन, को basis रे हमें DNA fingerprinting करूछे. First of all, DNA carries some non-coding repetitive sequences. इसो DNA पाखरे किछि कोन sequence अछि, non-coding repetitive sequences are there. Number of repeats is specific from person to person. For example, किछि लोकन पाखरे 8टा रिपीट थाई पारे, किछि लोकन पाखरे 9टा रिपीट थाई पारे, किछि लोकन पाखरे 10टा रिपीट थाई पारे. ठीक अछि, तो ये कोन होछि ना ना हम रिपीट्स लिखौछे, या तो आको में रिपीट समान थिबो, माने सपोज कोडिंग समान अछि तो रिपीट डिफरेंट हेबो, नले रिपीट समान अछि कोडिंग भी डिफरेंट हेई पारिबो. फॉर एग्जांपल, you can see in person 1 this GATA, 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 this GATA ये होछि कॉमन जिंस. देखो केतो रिपीट हेछि, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम में रिपीट हेछि. एनोटेट करके हमें देखिबा आकु हमें कोन डेट जानि परछे. If I do annotation, I mean number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, and number 8. After the repetition hechi. In the second person, same thing, GATA. Se chatta sequence repeat karchi. Kethara 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And the same thing is again being repeated in the third person, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So basically it कौन कहबो चाहूची कि एठी हमर जदी रिपीट टा जो अछि माने जो सीक्वेंस टी सीक्वेंस इज सिमिलर GATA गोटे सिंगल सिंपल सीक्वेंस टी अछि गोटे सिंगल सीक्वेंस टी अछि गोटे सीक्वेंस टी हाउ मेनी टाइप इट इज बीइंग रिपीटेड. तो जन पर्सन ए पाखे 8टा रिपीट, पर्सन बी पाखे 9टा रिपीट, पर्सन सी पाखे 10टा रिपीट. त माने एठु हम सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज जानि पाए. सिमिलरिटीज होछि कोन समस्त पाखे सेम सीक्वेंस अछि. द डिफरेंस कोन ना नंबर ऑफ रिपीट्स डिफर करछि फ्रॉम पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी. पर्सन टू पर्सन एटा वैरी करछि. ए जिंस हमर बुझियार थिला कि डीएनए कैरीज सम non coding. Please remember, this is the important part. Non coding means it has no role, it has no direct role in formation of protein. ये protein formation रे formation of protein formation ने it has basically no role. आर कौनसी रोल नहीं प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा. देन प्रोटीन के बनौची जेनेटिक कोड बनौची. जेनेटिक कोड र काम कोन ना जेनेटिक कोड को देखे कि हमरा अमीनो एसिड्स माने आसीबे. फॉर एग्जांपल AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन. तो ये मिथ्योनिन पे कोड करियो. What is methionine? Methionine is a type of amino acid. जो amino acid कौन करेगा ना bunch of amino acid methionine, glycine, leucine, isoleucine, valine, tryptophan, glutamic acid, aspartic acid. These are the different kind of amino acids. In your biomolecule chapter of chemistry and also in biomolecule chapter in biology in 11th class, हमें देखिए different kind of amino acids थे. 20 टा amino acids थे. 20 टा amino acids with 10 are essential, 10 are non-essential. उसे जो different amino acids बने थे, so amino acids मानने को नहीं कि वो group करा होची, bunch करा होची by peptide bond join है कि वो polypeptide की bond होची, that is called as protein. और प्रोटीन बनने ପାଇଁ कि ଆମେ डिपेंड करछे कहा ऊपर कोड ऊपर डिपेंड करछे. बट ये जो नॉन कोडिंग रिपीटेड सीक्वेंस माने रहिले आंकर बेसिकली किछि भी रोल नहीं. दे हैव जीरो रोल in formation in process of protein formation ने कौन से रोल नहीं. ताकि हमें कौन पूछ रहा है नॉन कोडिंग रिपीटेड सीक्वेंस देखुचे. एंड द नंबर ऑफ रिपीट इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्लियर. ये जो नंबर ऑफ रिपीट कहली सेम जिंस अछि बट वैरी करछि पर्सन टू पर्सन. या फिर जणा पाखे GATA अछि जणा पाखे थिबो CATA. एडी कोन हेला एडी सीक्वेंस चेंज हे गला. रिपीट सपोज आंको पाखे भी 8टा अछि आंको पाखे भी 8टा अछि. ये लास्ट वन टा G जगह रे C हे गला. सी हे गला कोन हेला ए जो रिपीट टी हटी गला ए रिपीट एठी नाही. तो आंको पाखे भी 8टा अछि आंको पाखे भी 8टा अछि. देन किंतु एठी गोटे नुवा पार्टी आसला नुवा सेगमेंट आसला ये हेला जिंस. या तो सीक्वेंस समान थिबो नहले सीक्वेंस जदी समान नथिला रिपीट भी डिफरेंस हे पाइ. You need to understand this thing very clearly. Next, if we move to the next slide, you can see over here now repetitive DNA can be separated from bulk genomic DNA as different peaks during the density. You know हमें जो DNA को centrifuge करोगे. What do you mean by centrifuge? Centrifuge माने हमें DNA को वो centrifuge में something 10,000 to 20,000 rotation per minute ताको मैं vigorously shake करोगे. और जो vigorously shake हबो DNA कौन करिवो ना आसे कि तार डेंसिटी अकॉर्डिंगली जे सब हेवी अछन जो तळे पेलेट फॉर्मेशन कर देबे आ जो लाइट अछन डेंसिटी अकॉर्डिंगली तार ग्रेडियंट सेपरेट हे जिवो. इमेजिन गोटे बोतल ले किछि गोलिया पानी अछि. ये जो डर्टी वाटर गोलिया पानी अछि ताको हम vigorously shake करिकि यू प्लेस द बोतल इन रेस्ट. कौन हम धीरे धीरे देखियो जो हेवी पार्टिकल डेंस पार्टिकल सब तळे आसी कि जमाटो बांध देबे आ जो लाइटर पार्टिकल्स माने ऊपर तांकर डेंसिटी अकॉर्डिंग सेपरेट हेतिबे. ठीक से वाला जिंस एटी कोन कहूची तबे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करूचे. फिंगरप्रिंटिंग रे कोन हेची एटी पिला माने मन रख ना जो रिपीटेटिव डीएनए जो अछंती एमान कोन करिवे ना बल्क डीएनए बनै के बल्क जीनोमिक डीएनए बनै के सेपरेट हेजिबे. देन रिपीटेटिव अलगा हेजिबो बल्क जीनोमिक सेपरेट हेजिबो डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग द density gradient centrifugation. जब density gradient ना cesium chloride density gradient centrifugation करथिले to know DNA replication is semi conservative in nature. आप डॉक्टर फ्रैंकलिन स्टाहल
and Matthew Michelson जन साइंटिस्ट आसी की प्रूफ करथिले N14 और N15 हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप ने की प्रूफ करथिले कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर ठीक से टाइप रा हमको डेंसिटी ग्रेडिएंट सिंपलीफिकेशन करबार अछि ठीक अछि ये गला यूनिफॉर्म डेंसिटी स्टार्टिंग रो नेकी एंड जाय कि समान पूरा अछि पूरा कंप्लीटली यूनिफॉर्म प्रोसेस रे प्रेजेंट अछि किंतु एपट हे जाय छि कंसंट्रेशन करा परे ताको ग्रेडिएंट अकॉर्डिंगली सैटेलाइट बैंड मानकर मेजर पिक आसीयो सैटेलाइट बैंड मान ऊपर रहिले आ तळे जो हमर प्लेट फॉर्मेशन करिकि तळे पार्ट रहला माने हम जो 99.9% सिमिलरिटी समस्त पाखे अछि द डिफरेंस केते अछि ओनली 0.1% ए 0.1% रे को माने अछंती ना ए मान आसी गले हमर रिपीटेटिव सीक्वेंस माने अछंती नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस माने अछंती से मान हम सैटेलाइट डीएनए बोली कहउछे और सैटेलाइट डीएनए जो अछंती ए माने ही मेजर रोल प्ले करछंती आको हमें कोन कहउछे सैटेलाइट बोली कहउछे आउ ए जो सैटेलाइट डीएनए माने अछंती ये फोन दीटा पार्ट रे डिवाइड हेचंती आउ दीटा पार्ट कोन हे गला वन इज योर मिनी सैटेलाइट and another is your micro satellite अब हमें डीएनए रेफरेंस जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करछे हमें कहा को यूज करछे ए मिनी सैटेलाइट माने को यूज करछे रादर देन दिस माइक्रो सैटेलाइट हमें यूज करछे कहा को मिनी सैटेलाइट को यूज करछे एते जिंस मन रख नेक्स्ट पार्ट को गले कहिबो डिटेल्स से कोन जिंस हैला now as let's say part as like a satellite DNA is classified as microsatellite and mini satellite etc on the base of composition tinta part re मन रखिबो एठी एटा तीनटा जिंस हेची you need to remember this three part first कोन कहला एठी ये जो satellite DNA formation हेची satellite DNA is classified as the microsatellites and mini satellites etc based on the base composition first कहला कि base composition कोन अछि AT अधिक थिले आमे ता कहबा माइक्रोसैटेलाइट GC अधिक थिले ताको आमे कहबा मिनी सैटेलाइट ठीक अछि जो देखो जे एठी the first one is microsatellites 2 to 6 bases per pair अछि तो एला माइक्रोसैटेलाइट आ एटी जो 100 बेस पेयर अछि 100 जाएंगे तक हम कहे मिनी सैटेलाइट मन रखिबो यूजुअली या देखा जाय कि ये जो माइक्रो अछि माइक्रो पाखर बेसिकली AT डबल बॉन्ड थिबो AT डबल बॉन्ड वाला थांती आ मिनी सैटेलाइट को मान थिबा बिका GC ट्रिपल बॉन्ड मान संख्या अधिक थाय नेक्स्ट a DNA sequence which is randomly repeated in many copy number is called as variable number tandem repeats a part of molecule that is called as VNTR and what is VNTR variable number tandem repeats good particular segment be बारंबार repeat हेजी and this repetition varies from person to person individual to individual and this VNTR belongs to basically कहा को belong करची mini satellite DNA को belong करची एटी तमो मन रखे अछि कोन मन रखिबो को जिंसटी कहली कि हम जो DNA फिंगरप्रिंटिंग करूचे ये DNA फिंगरप्रिंटिंग रे we are talking about the 0.1% because finger जेम हम समस्त फिंगरप्रिंट समस्त डिफरेंस अछि आई रेटिना जो फिंगर स्कैन हो जो फिंगरप्रिंट होची जो आधार कार्ड बनेला बडा में जे फिंगरप्रिंट देचे देन ये फिंगर ड्राइविंग लाइसेंस बनेला फिंगरप्रिंट दरकार पड़ची ये फिंगरप्रिंट इंडिविजुअल डिफर कर फिंगर समस्त कर अछि 10टा फिंगर सब लोग को पाइबो तमे एटी किछि एक्सेप्शन रहइबो किंतु 10टा लोगन को जो फिंगरप्रिंट देखिबो तमे समस्त फिंगरप्रिंट डिफरेंट आसीबो इंडिविजुअल वैरी करिबो ठीक से हम डीएनए प्रोफाइलिंग केस रे हम काहा को देखै छै ना फिंगरप्रिंट को देखै छै डीएनए प्रोफाइलिंग बा डीएनए फिंगरप्रिंट और एटी हम काहा कथा डिस्कस करछे बेसिकली ना हम एटी जो 0.1% थिला डिफरेंस से 0.1% को हम डिस्कस करछे 0.1 भीतर माइक्रो सैटेलाइट भी अछि मिनी सैटेलाइट भी अछि आ ए माइक्रो और मिनी भीतर हम काहा को टारगेट करछे ना मिनी सैटेलाइट को टारगेट करछे बाय सो जेम जेला माइक्रो सैटेलाइट माने हे गेला 2 to 6 नंबर ऑफ बेस पे रिपीट करछि आ जेहेतु आर साइज छोट अछि ओनली 2 to 6 बेस आ रिपीटेशन अधिक अछि 20 टाइम 8 टाइम 1000 टाइम 10,000 टाइम रिपीटेशन अछि किंतु जरे मिनी सैटेलाइट देखिबी आंकर कोन अछि ना हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर को नीति देछि तो रिपीटेशन कमी जाइछि एठी 2 to 6 बेस पेयर अछि बोली से 20 टाइम रिपीट करूछि एठी 100 टा बेस पेयर अछि बोली इट इज रिपीटिंग ओनली फॉर 5 टाइम बुझो ना बुझोनी मन रखो सपोज मते 10,000 जो एग्जांपल टी कहथिले आउ तो रिपीट करछि आई नीड 10,000 रुपीस इन हार्ड कैश मते हार्ड कैश रे कैश रे पैसा दरकार नॉट इन फोन पे नॉट इन गूगल पे नॉट इन पेटीएम नॉट इन चेक
not in Bitcoin, मते पैसा दरकार हार्ड कैश रे। ये हार्ड कैश जो 10,000 रुपीस कथा हम कहली ये जदि 500 रुपीस रो नोट हबो तले 500 नोट हेले मते बेसिकली 20 टा 500 नोट हे गले मोर 10,000 हे जिवो देन कहीं ना 5,010 आउ देन 10 टा जीरो आसीला 10,000 20 टा 5 टका नोट हेले और 5,000 हे जिवो किंतु जदि मु आको 5,000 500 टा 10 टका नोट करिवि 10 रुपीस वाला नोट हबो 10 रुपीस नोट हेले मते 1000 टा नोट दरकार हबो 1000 तो 10 बंडल बिड़ा नोट हेले जाएंगे 10,000 रुपीस हबो जेहेतु वैल्यू आर कम आर रिपीटेशन अधिक जेहेतु वैल्यू आर अधिक आर रिपीटेशन कम सिंपल फंडामेंटल मन रखिବାର ଅଛି मिनी माइक्रो भितर मेजर डिफरेंस होची कोन मिनी पाखेरा होची वैल्यू अधिक मिनी इज स्मॉल बट माइक्रो इज मोर स्मॉलर तो मिनी स्मॉल हेले माइक्रो ताड छोट हबो से तांगे मिनी रे माइक्रो अपेक्षा वैल्यू अधिक अछि जोटे वैल्यू अधिक अछि रिपीटेटिव सेगमेंट रो वैल्यू अधिक अछि तार रिपीटेशन कमी जिवो आर वैल्यू अधिक रिपीटेशन कम इन माइक्रो रे तार वैल्यू कम अछि छोट छोट सेगमेंट अछि छोट छोट पार्ट ता तेणु मल्टीपल टाइम रिपीट होछि तो जार वैल्यू अधिक तार रिपीटेशन कम जार वैल्यू कम तार रिपीटेशन अधिक एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड वैल्यू वैल्यू माने कोन इति जो सेगमेंट भी अछि वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट्स VNTR क्लियर तो से पार्टटा बेसिकली हम देखिले तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे हम कहार हेल्प नउचे ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे हम वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट को ही देखुचे आ से सैटेलाइट पार्ट रे देखुचे को पार्ट रे कोन अछि ना in the next part in a person copy number varies in each chromosome रे copy number टी vary करिबा जेमते कि two alleles means paternal and maternal of a chromosome also contain different copy number of VNTR our two alleles of a chromosome ठीक है डरनी you know what is chromosome you know what is gene you know what is DNA you know what is allele तल काहे डरिबा हम we know all those terms खाली समस्त को मिसे कि amalgamation करी नुवा पार्ट टी बने जे DNA fingerprinting Done. So basically, DNA fingerprinting को जगह यूज करछे आमी DNA fingerprinting हम यूज करछे to study about paternity then to prove देखि तो मूवीज माने कर देखिथिबो बा एमति किछि सिनेरियो देखिथिबो कि there was a mother there was a son or there is a child and a child रो paternity test करछ बापा की हबो मां जणे अछि बट से बापा कहछि नाय मोई छुआ को एक्सेप्ट करिबनी मो छुआ नुए से मना करदिले तो हबनी जिंसटी तो एई केस रे कोन हबो ना हम DNA प्रोफाइलिंग करैबा कारण चाइल्ड पाखे जो डीएनए अछि से डीएनए टी कोट होइछि बोथ पैटर्नल आ मैटर्नल अच्छा मां तो टेक्निकली जणे ही परिबो ये सुन जी ताकू 9 मंथ रा गेस्टेशन पीरियड परे जन्म देछि सीधा टेक्निकली मां हे गेला तो मां डीएनए छुआ पाखे तो नियत रहिथिबो हेले एई जो तीनटा सस्पेक्ट अछंती सस्पेक्ट ए सस्पेक्ट बी सस्पेक्ट सी ये तीन जनक भितर किए ओरिजिनल तार फादर हबो तार टेस्ट हम कर परिबा केमिति डीएनए फिंगरप्रिंट करी Second, आपको जगह हम यूज कर पारिबा suppose in a crime scene. Suppose I'm standing inside the studio. Studio एठी मो एकुटे अछि डन बट एठी मो आसला पूर्वरु एठोडे क्राइम पे हे जायछि ओडे लोक जनकी मारि देई पड़ैछि एंड ए क्राइम सीन रो मने दीटा ब्लड स्टेन पड़ैछि तो वन ब्लड स्टेन तो कार हे भीतर से जो विक्टिम जे अछि तार डेथ हे जायछि जे मरि जायछि तार ब्लड पड़छि न आउट जो ब्लड मते मिलछि से कार हेतिबो जे जार प्रेजेंट थिला इसन ड्यूरिंग द डे जे प्रेजेंट थिला वे हाथा भाई भितर झगड़ा हैला भितर तार भी किछि ब्लड भाइछि म दी प्रकार ब्लड स्टेन भाइछि मते ब्लड मिलु बा मते ओटे हेयर पार्टिकल टे मिलु मते किछि बॉडी रे किछि ओटे पार्ट टी मिलु टिश्यू टे किछि ओटे मिलिछि मते तो सी हेबे हे गेला सस्पेक्ट तो मोर टेक्निकल सस्पेक्ट ऊपर तीन जण कोन सस्पेक्ट अछन तो मो से जो सैंपल पाइछि से सैंपल डीएनए प्रोफाइलिंग करिवि एंड जो सस्पेक्ट अछन से माने डीएनए प्रोफाइलिंग करिवि जहां से सेटा बहुत भल से मैच करिवो he or she will be the murderer or he will be the she will be the eyewitness जे जगहटा हेइथिबार देखिछि जिंसटे हेइथिबार देखिछि तो DNA fingerprinting is as simple as that you know what is DNA you know what is gene you know what is satellite DNA 99.9% समस्त सिमिलर अछि only 0.1% डिफरेंस अछि अच्छा तमे एट क्वेश्चन कर परिबो कि सर आमे को सीक्वेंसिंग कर परिबा नै जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंस कर परिबा बट सीक्वेंसिंग ता इट विल टेक मच टाइम एंड बहुत कॉस्टली वो तुम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहबो बोल जाइतली कि गोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस को सीक्वेंस करिया पई कि $3 खर्च होइतला एट दैट टाइम से समय 1990 2003 भितरे से टाइम रे $3 खर्च होइतला गोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस को सीक्वेंस करिया पई
एंड हमें सीक्वेंस करथिले 3 into 10 to the power 9 number of bases बुझौछि तो इट्स बेसिकली 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च होइछि प्रोजेक्ट करिया पई एंड दिस 9 बिलियन इज नॉट समथिंग स्मॉल अमाउंट which is देशर जीडीपी जाउछि सो 9 बिलियन डॉलर हेलेनी the 9 billion US dollar जो थिला at that particular time it is a very huge amount और जो database उधर बनला बड़ हम बहुत सारा 3300 बुक्स बनेको पड़थांता जो बुक रे 1000 पेजेस थांता each page रे 1000 अल्फाबेट थांता the same ता बहिटे database टे जरे हम फिजिकल फॉर्म में प्रिंट आउट हम काढी थांते तो क्लियर तो हम सीक्वेंसिंग काढी कर परिबानी कारण अब 99.9% दिजनक समान अछि मो से डिफरेंस केमे देखछि ये भी समान से भी समान ए जगह में कौन देखिले जो 0.1% डिफरेंस अछि से 0.1% जो डिफरेंस टी अछि से डिफरेंस हमें कौन करे ना ता भीतर पुणी हमें मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट रे दुटा पार्ट डिवाइड कर देले एबे जो मिनी और माइक्रो रहला सेठी जो मिनी सैटेलाइट अछि हमें ताको ही नहीं कि से जो वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट अछि से पार्ट को करतो क्लियर इट इज वेरी सिंपल मेकानिज्म कौन तुम कहिबी स्टेप बाय स्टेप तुम बुझाई देबी आउ तमर काउंसिल एग्जाम रे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2 मार्क क्वेश्चन आसिले तार प्रोसीजर पचाइतो एनसीईआरटी बही रे 6 टा स्टेप दीची आ मु तुम ईच एंड एवरी स्टेप को वेरी हम्बली आउ बहुत भल से तुम बुझाइबी जस्ट स्टे ट्यून टू द क्लास क्लियर नाउ see the VNTR is specific from person to person. What is VNTR? Remember this word variable number tandem repeat and it is specific for every individual person to person vary kariba the size of VNTR varies from 0.1 to 20 kb kb means kilo basis 0.1 to 20 kb जाएंगे eta hamara vary करूची from person to person now any difference in the nucleotide sequence that is called as inheritable mutation yes or no जहाँ भी किसी डिफरेंस होची जोड़ा हम इनहेरिट करूचे फ्रॉम आवर पेरेंट्स ठीक है हम पेरेंट हम इनहेरिट करूचे जरी किसी म्यूटेशन से ऑब्जर्व हैला इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्लीज रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म किसी समय पूर्व कहितली पॉली मींस मेनी और मॉर्फिज्म रो माने हेला कोन हेछि ना स्ट्रक्चर तो डीएनए रो स्ट्रक्चर रे बहुत सारा जगह तुमको चेंजेस दिखाई दियो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दिबो so any difference in the nucleotide sequence observed in the population is called as DNA polymorphism and it is also variation at genetic level जेमते कि तमरो भी आखि अछि मोर भी आखि अछि तुम आखिरोटे कलर अछि मो आखिरोटे कलर अछि एटा ब्लैक हे पारे ब्राउन हे पारे you are having a skin I am having a skin so you difference between skin color he paribo you are having hair I am having hair ro texture it as well whether it is straight curly change as paribo you are having blood I am having blood so blood group change he paribo you are having A positive I am having O positive you are have someone is having B negative or AB positive B negative D positive and the differences am bhitar asi parche accordingly then the polymorphism is higher in non-coding DNA sequence one like sabale jinsati polymorphism कोडिंग सीक्वेंस अपेक्षा नॉन कोडिंग सीक्वेंस रे अधिक थांती काहे कोन पैकी पॉलीमॉर्फिज्म के नॉन कोडिंग सीक्वेंस अधिक थाए कैन यू टेल द आंसर कोन पैकी नॉन कोडिंग अधिक रहइबो बिकॉज़ नॉन कोडिंग रे बेसिकली किछि रोल नाही प्रोटीन फॉर्मेशन करिबारे जेहेतु किछि रोल नाही ताले एई जो म्यूटेशन टी हेजी से आगु जाई परिबो जे में कोडिंग सीक्वेंस के किछि म्यूटेशन करछे रिमेंबर if we are doing any kind of mutation in the coding sequence so mutation will lead to variation और जो variation आसीबो से प्रोटीन फॉर्मेशन चेंज हेजियो और जो प्रोटीन चेंज हे गला the cell will be dead और जो सेल डेड हे गला टिश्यू मरिबो टिश्यू पर ऑर्गन ही मरिबो माने म्यूटेशन टी आगु पास नहीं ही परिबो that's why coding sequence बहुत कम चेंज हेता है rather than non coding sequence तमे एई पार्ट तो एमिति बुझिबो तुम जो नोट कॉपी अछि से नोट कॉपी तुम बेसी चेंज करनी ले रफ कॉपी रे बेसी चेंज हेते और खास करी रफ कॉपी रो लास्ट पेज रे तुम बहुत सारा यार से मन बड़ा कहानी लिखि दिबो किछ कैलकुलेशन करथिबो गाड़ी देथिबो का ना लिखा हितो का नंबर लिखा हितो तुम जहां भी चेंजेस करबो ये परसेंट टू परसेंट वेरी करिवो सपोज गोटे क्लास रे गोटे टीचर समस्त सिमिलर वे रे पाठ पढै छथि और पिला माने से पाठटा को से लेखाटा को नोट कॉपी रे लिखि छथि तो समस्त को नोट कॉपी रे देखिबो नोट सिमिलर थिबो सेठी कि मेजर चेंजेस हे नथिबो तो सेठी कि मेजर चेंजेस हे गला कल से आंसर टी भूल हेतिबो बट रफ रे सेठी देखो वेरिएशन अछि बिकॉज़ रफ इज नॉन कोडिंग तार किछि लेन देन नाही किंतु जो हमर मेन आंसर लिखि दैट इज द कोडिंग पार्ट
तार डेफिनेट मीनिंग अछि जो डेफिनेट मीनिंग रे जदि हम डिजायरेबल जिंस न लिखा है तार मीनिंग चेंज हो जिवो as simple as that. The same point will like polymorphism is higher in non-coding DNA sequence because mutation in this sequence may not affect an individual's reproductive ability. तो एठी जरी म्यूटेशन हैला कोठी नॉन कोडिंग पार्ट रे तली आगो जाय कि म्यूटेशन ने किछि हेल्प करिवो नाही बा हमर एठी जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रे किछि चेंजेस आनिवो नाही माने रॉक खातिर ये किछि लिखा है जे चलिबो किछि असुविधा हबो किन मेन आंसर जो कि भूल हे गला से भूलटा भूल हिसाब रे काउंट करा जिवो these mutation accumulate generation to generation causing polymorphism अगर नॉन कोडिंग रे किछि म्यूटेशन हेछि से आराम से accumulate कर परियो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस हे कि जाय परियो तो बेसिकली मन रखियो गोटे जिंस जदि कोडिंग सीक्वेंस रे किछि चेंजेस आसुछि ताले सेही चेंजेस टा आगो जाय कि म्यूटेशन करिवो वेरिएशन आनिवो आ से वेरिएशन एलील फॉर्म रे वेरिएशन आसिला परे से एंटायर फिनोटाइप टा चेंज हे परियो देन किनु जदि हमर नॉन कोडिंग पार्ट रे किछि चेंजेस आसिछि नॉन कोडिंग पार्ट रो प्रोटीन फॉर्मेशन सहित किछि भी लेन देन नाही जेमति कहल तुम रफ कॉपी रे तुम कोन लिखिछ तार तुम इवैल्यूएशन शीट्स रे किछि मतलब नाही ठीक से बड़ा जिंस नॉन कोडिंग रे जदि किछि जिंस चेंजेस हेछि तार भी तुम नॉर्मल phenotype सहित किछि भी लेन देन आसीबो नाही यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग यू कैन सी इन दिस डायग्राम एटी कोन हेछि जगह रे ना हमर एटी जी सी ए सी जी एटे सब समान अछि जदि ब्लू कलर पर्सन पाखे देखिबो एटी ए अछि से एग्जैक्ट सी जगह रे ग्रीन कलर पाखे रे जी अछि आ पिंक कलर पाखे रे टी अछि बाकी सब समान अछि त माने गोटे सिंगल जगह रे सिंगल न्यूक्लियोटाइड एटी चेंज होछि जो पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखुचे जो स्ट्रक्चर चेंज अछि जे कोड चेंज अछि गोटे सिंगल जगह रे एई जगह रे देन तुम जान जो जेनेटिक कोड में ट्रिपलेट थांती जीसीए 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 कॉमन अछि इन एपटे एटा हला एसीजी इगला जीसीजी इगला टीसीजी मीनिंग चेंज ठीक है हम टिके गोटे जिंस चेंज कर देला मीनिंग चेंज हो गला हल्का ना चेंज कर मीनिंग चेंज हो गला ईएटी ईट माने खाइबा ईएटी पाखे एच लगे देली हीट हो गला हीट माने गरम मीनिंग चेंज बुझो छी ईट और हीट चेंज हो गला एठी एम्पल ए ए पीपीएलई इगला एप्पल एप्पल कहले गोटे फ्रूट आसिला पी जगह में एम लिखि दउची सिगला एम्पल एम्पल माने बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग आसिगला एठी जिंस छोट छोट जिंस रे एठी हमर किछि भी हम चेंज कर देले बी ओ वाई बॉय बॉय मींस अ मेल बट बी ए वाई बे मींस में हे गेला कोन गोटे अबिका गोटे बे ऑफ बेंगल गोटे कोस्ट हे गेला सिंगल जगह हम मीनिंग गोटे अल्फाबेट को चेंज करले और कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाई छी ये वाला सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphism and polymorphism have great role in evolution and speciation. What is speciation? Evolution में पढ़ो speciation means formation of a species. ଗୋଟେ species ଟି formation କରିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ species ଟି ବନିବ ଯେମିତି homo sapiens sapiens ଆମେ ବନିଛେ ଆମେ starting ରେ homo sapiens sapiens ନଥିଲେ homo neanderthalensis ଥିଲେ homo habilis ଥିଲେ homo erectus ଥିଲେ then homo sapiens finally formation ହେଇଛନ୍ତି neanderthalensis homo habilis homo erectus then ଯାଇକି ଆମେ homo sapiens ହେଇଛେ क्लियर ये जो नया स्पेसीज टी फॉर्मेशन है जे होमोजेनस समान अछि जो स्पेसीज से चेंजेस अछि से स्पेसीज पे हमें जो देखिबा से इवोल्यूशन है कि नहीं अछि गॉरिला टू हम लगा गॉरिला सिंपल जो लगा सिंपल जो माकड़ टो लगा ठीक अछि माकड़ डायनासोर टो लगा ते मान सो स्पेसीज बाय स्पेसीज मान सो चेंजेस है कि एस्टेंट यू नीड टू रिमेंबर दिस सेगमेंट नाउ ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रो स्टेप कोन अछि फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमको प्रथमे डीएनए को आइसोलेट करने को पड़े व्हाट डू मीन बाय आइसोलेशन आइसोलेशन ना माने कोन ना आइसोलेशन माने होची हमको डीएनए को काढिया को पड़िबो डीएनए को हम कोठो काढिबा ना डीएनए को हम काढिबा फ्रॉम ब्लड स्टेन रो नले हेयर रो नले सीमेन रो नले सलाइवा रो नले बोन रो हमें को भी पार्ट रो हमको डीएनए को आइसोलेट करिया को पड़िबो वंस वी आइसोलेट द डीएनए सैंपल आइसोलेशन हे सल्ला परे हम से डीएनए को ने के लैबोरेटरी प्यूरिफाई करिया पड़िबो प्यूरिफाई करके हम से पार्ट टा को चेक करिया कोन कोन चीज सब अच्छी बोली now see, the isolation means from any cells or blood stains, semen stain, saliva, hair roots, bones, skin, etc. We need to isolate the
डीएनए देख पाइल ब्लड रू भी डीएनए काढी परिबा हेयर पार्टिकल रू डीएनए काढी परिबा सीमेंट जो हेगला स्पर्म सेटू भी डीएनए काढी परिबा सलाइवा रू डीएनए काढी परिबा बोन रू भी डीएनए हमें काढी परिबा वंस हमें डीएनए काढिले नंबर 2 होचे डाइजेशन ऑफ डीएनए हमको नीड टू डाइजेस्ट द डीएनए डाइजेशन मींस कोन डीएनए को स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट छोट छोट टुकड़ा रे हमको कन्वर्ट करिवा अछि बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हम एटे एंजाइम यूज करछे मॉलिक्यूलर सीजर मन रखिबो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आल्सो कॉल्ड एज ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हम यूज करने एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रा काम कोन इट विल क्लीव माने कोन करछे डिकट करछि और डीएनए इनटू स्मॉलर सेगमेंट ऑफ वेरियस साइजेस तो डिफरेंट डिफरेंट साइज रे डीएनए को हमें कोन करले ये थिला हमर सैंपल ले कोन बा करले हमें ना डीएनए बनेले से डीएनए को जदि हम देखिबा जूम करके हमको जे ए वाला डीएनए देखा गला ए जो डीएनए अछि ये होचे 2.2 मीटर आ एते बड़ डीएनए को नै हम किछ करि परिबा नै तो हम देखो स्मॉलर पार्ट रे सेगमेंट कर दे छोट छोट टुकड़ा रे काटी देले ए जो काटिया पे हम यूज करछे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और सबुट इंपोर्टेंट एग्जांपल होची रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रो नाम कहूची ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रो हम अलगा ना भी कहि पारे दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर कोन कहि पारे ताको मॉलिक्यूलर सीजर सीजर माने हे गला कोइंची जैसे मॉलिक्यूलर कोइंची माने ना हमर मॉलिक्यूल को डीएनए को छोट छोट पार्ट रे क्लिप करि पारछि कट करि पारछि अच्छा ये जो डीएनए अछि देखो ये जीएएटीटीसी एपटे जीएएटीटीसी एपटे जीएएटीटीसी एपटे जीएएटीटीसी बेसिकली इट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ठीक अछि आको हम कोन कहि परछे ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रो माने कोन ना पैलिंड्रोम रो माने होची रिपीटेटिव यूनिट्स जब मैं आगरो देखिबो जेमते देखा जाउची पछो देखा सेम देखा जाउची तुम पर बेसिक आइडिया पिला बरे थिबो जो डीएनए अछि डीएनए हैज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड डीएनए गोटे पॉलीमर टे पॉलीमर चेन ने कह देछि इट इज एंटी पैरेलल इन नेचर वन स्ट्रैंड इज रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम another is running from 3 prime to 5 prime it is anti parallel in nature ये जो एंटी पैरेलल डीएनए प्रेजेंट अछि लाइक दिस एंटी पैरेलल डीएनए ये एंटी पैरेलल one strand is running from 5 prime to 3 prime and the another strand is running from 3 prime to 5 prime ये जो एंटी पैरेलल डीएनए अछि आदि एमिति के सीक्वेंस अछन जो माने होचनी पैलिंड्रोम इन नेचर जेमति कि मु कहबी कि मैडम गोटे वर्ड मु कहली एम ए डी ए एम मैडम if you read from this direction it is madam if you read from this direction it is again madam yes or no which part एपट जरी पढिबो एम ए डी ए एम व्हाट इज दिस मीन मैडम सेपट पढिले एम ए डी एम मैडम सेम गोटे वर्ड आसिला मलयालम एम ए एल ए वाई ए एल ए एम read it from both the direction from 3 to 5 jaha haba from 5 to 3 भी सही हबा मलयालम ये सुन एई सब वर्ड को पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोली कहि थाउ डी रे तो एम नाही कि वाई नाही कि एल नाही एटी ए टी जी सी थांती तमे तो देखिबो जी ए टी टी सी एपट देखिबो भी जी ए टी टी सी एपट से जी ए टी टी सी ओटा आडू देखिले भी जी ए टी टी सी तमे आगरो पढुछ जेमिति पछरो पढुछ सेमिति ओडिया रे गोटे एमती वर्ड अछि लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ओडिया रे एमता कि वर्ड को देखो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होई पाइबा अब तुम हिंट दउछि है कि गोटे डिस्ट्रिक्ट रो नाम रे पढिबो सेटा जो हम ओडिसा 30 टा जिल्ला अछि जिल्ला रो नाम रे पढिबो वो एमता कोन ना अछि लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जो माने क्लास करछ Yes, Katak. Priyanka Priyasini has given the right answer. Katak. Katak. Katak हो जाए हमारा palindromic sequence विपटा में देखि पारिबा. Great Priyanka. The answer समझते बुझि पाइलो. The restriction endonuclease enzyme रो काम कोन ना ये डीएनए को क्लीव कर देबो. तो फर्स्ट हमें डीएनए नबा डीएनए को निसला पर ताको अबिका restriction enzyme देकी बा restriction endonuclease enzyme देकी ताको डीएनए को हमें कट करिबा. कट कला पर डीएनए में छोट छोट टुकड़ा रे बा सेगमेंट रे कन्वर्ट हे जिवे देन जो छोट छोट पार्ट हे जेचंती तांकु हम बस सेपरेट करिबा आ सेपरेशन कोस रे करिबा नंबर 3 पॉइंट को आसबा बिका हमें ए जाई कि
नंबर 2 हम कौन जानिले डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नंबर 3 को जरी जिबा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बुझे जिनसटी किछि कष्टिका जिनस नो सहजिया पार्टी अछि। यू ऑल नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यस और नो? प्रियंका टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए कोन पई के नेगेटिव, डीएनए पाखे एमति कोन टा जो पई डीएनए नेगेटिव अछि? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, व्हाई सो? Rajlakshmi, Shruti, Subhasri, and all those students sitting in the respective higher secondary schools, Krishna, Meghamini, why DNA is negative? DNA पाखे एमती कौन टा अछि DNA नेगेटिव होची? मतलब DNA चार्ज होची नेगेटिव। आप पछ रीजन कोन? केही कहबनी? So because of phosphorus, yes, Priyanka, right answer. DNA is negative due to presence of sugar phosphate backbone. DNA जो तैयारी ହେଇଛି DNA ପାଖେ କଣ ଅଛି? ସୁଗାର ଅଛି, ଫସଫେଟ ଅଛି, ସୁଗାର ଅଛି, ଫସଫେଟ ଅଛି। yes or no? ଏ ଯୋଉ ଫସଫେଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଫସ୍ଫୋଡାଇଷ୍ଟର ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ PO4 3- ଯୋଉ ଅଛି, that's why DNA is negative। ଆଉ ଯିଏ ନେଗେଟିଭ ସେ କୁଆଡେ କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଯିବ? ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ପଜିଟିଭ ଏଣ୍ଡ କୁ ଯିବ। ପଜିଟିଭ ଏଣ୍ଡ ମାନେ କିଏ ଆସିଲା? ଆନୋଡ ପାଖକୁ। ତ କ୍ୟାଥୋଡ ରୁ ବାହାରିକି ଆନୋଡ କୁ ଯିବ। ଏଗେନ୍ ଯିଏ ଯେତେ ଛୋଟ ଅଛି ସେ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଏବେ ଗୋଟେ ରନିଂ ରେସ୍ ଟି ହଉଛି, 100 ମିଟର ରନିଂ ରେସ୍ ହଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର ଏଣ୍ଡ ପୋଜିସନ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଠି ଏଣ୍ଡ ହବ। ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପିଟି ସାର୍ ତାଙ୍କର ହୁଇସିଲ ବ୍ଲୋନ୍ କଲେ, ପିଟି ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାପ ଟେ ମାରିଲେ, ଅନ୍ ୟୁର ମାର୍କ ଗେଟ୍ ସେଟ୍ ଗୋ, ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ये जो पार्टिसिपेंट ମାନେ ଦୌଡିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯଦି ପତଳାଟି ଥିବ, ଯାହାର ଷ୍ଟାମିନା ଅଧିକ ଅଛି, ସିଏ ଆଗ ଦୌଡିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ମୋଟା ମଣିଷଟି ଅଛି, ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଅବିକା। ଠିକ ସେମିତି ସାଇଜ ଆକର୍ଡିଂଲି, ଚାର୍ଜ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବେ। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଡିଏନଏ କଣ କରିଥିଲେ? ସେଗମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହୋଲ ଡିଏନଏ କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ। ଡିଏନଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଡିଏନଏ କୁ ଆମେ କଣ କରିଛେ? ଏଠି କଟ୍ କରିଛେ। କଟ୍ କଲେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରି? ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏନଜାଇମ୍ ୟୁଜ କରିକି। ଆଉ କଟ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସେପାରେଟ କରିଦେଲେ। କେମିତି ନା ଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍। ଏ ଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ରେ ବେସିକାଲି ଅଛି କିଏ? ନା ଆଗାରୋ ଜେଲ ଟି ଅଛି। ଆଗାରୋ ଜେଲ ମାନେ କଣ? ଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ରେ ଏଠି ଆଗାରୋ ଜେଲ ଅଛି। ଆଗାରୋ ଜେଲ କରୁଛି କଣ? ନା ଆଗାରୋ ଜେଲ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ श्रुति भी राइट आंसर दीजिए फॉस्फेट ग्रुप, कांग्रेचुलेशन। तो अगर जेल आम कौन करते अगर जेल पे हम अच्छी कौन आम पाखे अगर जो अगर अगर पाउडर तैयारी अगर जेल से जो अगर जेल टा कौन अच्छी ना तादरे हम गोटे बफर सॉल्यूशन टे नीचे आ ये जो बफर सॉल्यूशन अच्छी इट इज अल्कालाइन इन नेचर और डीएनए होची एसिडिक इन नेचर। गोटे एसिडिक पार्ट अल्कालाइन पार्ट रखिचे से डीएनए को मेल्ट हवा को दउनी सीधा भाबे रन करिया को हेल्प करती। और डीएनए जब रन करूची फ्रॉम दीज आर कॉल्ड एज वेल्स। आको हमें वेल बोली कहबा। वेल माने कोन? जब हम अगर पाउडर नेले ताको हमें मिसेले बफर रे मिसेले, बफर रे मिसेकी ताको अबिका हमें गोटे लिक्विफाइड सॉल्यूशन नी बनेले। ये जो लिक्विड सॉल्यूशन टी अछि ताको हमें जेल कैस्केड, ये जो पार्ट तमे देखुछ पिला माने दिस इज कॉल्ड एज जेल कास्टिंग ट्रे। ये जो कास्टिंग ट्रे अछि, ये कास्टिंग ट्रे रे हमें एठी रखिले गोटे कम ट्यूब। कम माने कोन? गोटे पानी भाबी देखो ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ ବନୁଛି। ତମ ଘରେ ଦେଖିଛ ଫ୍ରିଜ ରେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ ବନୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ ସେପ ଟି କେମିତି ଆସିଲା? ପାଣିର କିଛି ସେପ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ବରଫ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସେପ ର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବଟଲ ରେ ରଖିବା ସେ ବଟଲ ସେପ ର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ରେ ରଖିବା ସ୍ପୁନ ସେପ ର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ ରେ ରଖୁଛେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ରେ ତାହେଲେ ସେ ବି କ୍ୟୁବ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟି ଫର୍ମେସନ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ହେଇଛି କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଏଠି ଆମର ଡିଏନଏ ଥିଲା ସେ ଡିଏନଏ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅବିକା ତାକୁ ଏବେ ସେପାରେଟ କରୁଛେ। ସେପାରେଟ କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଅଗର ପାଉଡର ନେଇଛେ ଆଗର ଜେଲ ବନେଇବା ପାଇଁ କି ଏ ଜେଲ ଟା ଲିକ୍ୱିଡାଇଡ ବନିଲା। ଯେବେ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ହବ କୁଲ ଡାଉନ ହବ ସେବେ ସଲିଡ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ପାଣି ଟା କୁଲ ଡାଉନ ହେଇକି ଆଇସ ହେଇଯାଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ରୁ ସଲିଡ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଯୋଉ ଜେଲ ଫର୍ମେସନ ଆମେ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି ଅଗର ପାଉଡର ଟା ସଲିଡ ଥିଲା ବଫର ରେ ମିଶା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ହିଟ୍ କରାଇଲା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ରେ ଆମେ ହିଟ୍ କରିବା। ହିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଟା ଲିକ୍ୱିଡାଇଡ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ପୁଅର କରିବା। ପୁଅର କରିବା ମାନେ ଢାଳିବା। କୋଉଠି ଢାଳିବା? ଏ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେ ଅଛି ସେ କାଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେ ଢାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ ଟେ ରଖିଦେଇଥିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର କାଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାନିଆ ଭଳିଆ କମ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ରଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍
थ्री डायमेंशनली बुझ गोटे कम टी रखाई जाइए आ तापर कौन कली ना एठी ना ए जो कोनिकल फ्लैक्स थिला और कोनिकल फ्लैश टा माखन मु पोर कले ढाळिले अबिका जे मु पोर करूची ये जेल टा सब आडे इवनली स्प्रेड कर जीवो ये सब आडे अब इवनली स्प्रेड कर जाईची और इवनली स्प्रेड कर सला परे जे सॉलिडिफाई हे जाउची ठंडा हे जाउची देन मु कम को यूजुअली रिलीज कर देउची जे कम टा मोर ए वाला प्रेजेंट लेकी थिला मु से कम टा को सेटु में रिलीज कर देली और कम रिलीज करला कोन हेला गैप गैप बन जाईची से जो गैप फॉर्मेशन हेची दोस गैप आर कॉल्ड एज वेल्स तको हम कोन कहबा it is called as WELF ताको वेल बोली कहल एबे हमें कोन करबा जो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल हमें नेचे ये सैंपल को टिके टिके नै कि ए जगह सब वेल रे हमें पोर करबा डन डिफरेंट डिफरेंट सब्सट्रेट और डिफरेंट डिफरेंट सैंपल नेचे पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 ताको डीएनए अलग अलग जाईची आ से डीएनए को हम सैंपल से त मिक्स के पठीचे अच्छा मन देखो डीएनए इज कलरलेस किसी कलर नहीं एठी हमें कोन करछे एठी किछ कलर देइछे आकु देखिया पई कि स्टेनिंग करिया पई कि हमें जानि परिया कि जो बैंड फॉर्मेशन होची एठी ए बेला कलर आसीबो ए जो मिथिलिन ब्लू जो कलर आसी जो ऑरेंज कलर जो आसीची ए कलर आसिया पई कि हम एठी कोन देइछे एठी किछि डाई मिसेइछे किछि लोडिंग डाई त कहै छै ठीक अछि ए जो हमर टेस्ट ट्यूब ढेरे हमें तो कोन मिसेइछे किछि लोडिंग डाई जेन हम चुट्टी पाची गले हमें हेयर डाई यूज करछि कलर तो हम लोडिंग डाई एठी यूज करछि ता सहित ये जेल में बनेला समय रे हमें जेल रे ऐड कर देइछे इथिडियम ब्रोमाइड ETBR इथिडियम ब्रोमाइड कौन करिवो ना डीएनए को कलर बनेबो आ कलर जो हमें यूवी लाइट रे देखिबा हमको ए बडा किछि बैंड फॉर्मेशन हो ए बडा किछि बैंड हमको दिखाई देना जरा किछि देन ए बडा किछि बैंड फॉर्मेशन हबो और ताका साइज अकॉर्डिंगली सेपरेट हेतिबो देन हमें डेटा देखि परिबा और वंस हमें एटी लोड कर देले लोड कर सला पर इथिडियम ब्रोमाइड अछि ये हला नेगेटिव पार्ट कैथोड सेपरेट अछि पॉजिटिव पार्ट एनोड हमें पावर सोर्स देले और पावर सोर्स देले कोन हबो ना डीएनए बीइंग नेगेटिव इन चार्ज डीएनए विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ए डायरेक्शन में जीवो द स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फास्टर इट मूव्स देखो जीवे समस्ते जेहेतु डीएनए नेगेटिव सेपटे अछि एनोड होछि पॉजिटिव तो कैथोड रो एनोड एडको समस्ते दियो सिंपल जिंस the smaller the size of the molecule the faster it moves or the longer it travels सेते अधिक बाट ये ट्रैवल करके जाई परिबो तो एई विशेष रे हमें साइड रे कोन करछ ना गोटे जगह रे हमें ऐड कर देछे डीएनए लैडर टी देन जेमति कि गोटे एग्जांपल दे कहूचे पिला माने मु एठी गोटे छोटे गारटे टानिली एंड मु पचली पिला मानु को कि पिला माने ये स्ट्रेट लाइन नो लेंथ केते तो how to know the length straight line length हमें केमे जानि परिबा कोन करि परिबा ना पाखि मेजरिंग टेप अछि आबे गोटे स्केल टी अछि आबे स्केल आनिबा आ स्केल एटी पकेबा एंड आमे स्केल जो वैल्यू अछि डायमेंशन वैल्यू देखि कि आमे जानि परिबा कि आर डिस्टेंस टी केते कि हबो परि यस और नो बुझि परछ कोन कहै चाहूची आर यू गेटिंग माय पॉइंट we'll take a scale or we'll simply take a divider आमे डिवाइडर में कि गोटे पॉइंट रखिबा एई जगह रे आ गोटे पॉइंट रखिबा एई जगह रे एंड रखि सल्ला पर सेठी जो साइज टी आसिला ताको नि हम स्केल रे देखिबा एंड वी गेट टू नो द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ठीक सेमती वी आर हैविंग अ लैडर एंड व्हाट डू मीन बाय लैडर ना लैडर होची गोटे डीएनए रो फ्रैगमेंट रो साइज तार हम भाबी द स्केल टे होची डायमेंशन दासो लिखाई छी तो ए जो डीएनए मान सेपरेट हिचंदी लैडर सपोज ए जगह लिखाई छी 50 केबी ताले एठी समान जो मान सब रहिले ये सब गेल 50 केबी ये भी 50 केबी आ पुरछु जे अछि जेला 100 केबी रो येला 100 किलो बेस रो ता पूर्व अछि 200 किलो बेस ता परे 500 किलो बेस 1000 किलो बेस तो एबे जत्ते बड़ बड़ पार्टिकल से पछु थिबे माने ऊपर पर्सन आडको छोट छोट पार्टिकल्स आगु जाइथिबे तो एमान ता साइज अकॉर्डिंगली सेपरेट हे गेले एंड ए पार्ट को हम आगु नै कि बिसी की देखिबा कोन जिंसट हिच बोली गेटिंग माय पॉइंट कोन कहया चाहू जानि पाइलो एटी 1000 500 200 150 ए वाला से मान सब डिफरेंस है कि आस्टर then the first step thila isolation of DNA second step thila cutting by splicing of the DNA by digesting the DNA by using restriction endonuclease enzyme number 3 is separation of DNA fragment by using gel electrophoresis then treat the DNA fragments with alkali solution NaOH to denature DNA bonds in the gel into single strand
ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଆଲକାଲି ସଲ୍ୟୁशन ପକେଇଛେ ଯୋଉ ବଫର କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆଲକାଲି ସଲ୍ୟୁशन ଏଠି ଆମେ ଦେଇଛେ NaOH ସଲ୍ୟୁशन ସେ କଣ କରିବ ଏଠି ନା DNA ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ କରିଦବ DNA ଏସିଡିକ ଯେବେ ବେସ୍ ଗଲା ପାଖକୁ ସଲ୍ୟୁशन ଟି ଗଲା ଆଲକାଲି ସଲ୍ୟୁशन ରେ ସେ ଅବିକା ଏସିଡ ଆଉ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ନ ହେଇକି ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇଛେ ତା ରିଜନ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ଏନି ଡାଉଟ participants Shruti, Subhalakshmi, Subhasri, Prahlad Higher Secondary School, Priyanka, Meghavani, Tripathi. Any of you have any doubt till this? The doubt is if you have any doubt, then you can ask me in the chat box. Nagu jiba. Okay. Okay, Shruti. No doubt. ठीक है हम आगे ଯିବା तो ଏଇ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ clear now step number 4 now in network transfer or blotting of the DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon हमें 8 picture टा first step में देखो first step रे we have isolate the DNA second step रे we have fragmented the DNA cut digested the DNA by using restricted endonuclease enzyme third हमें DNA को separate कर देले based on their size ताको length according से separate हो गए and also double strand को हम single strand कर देले alkali strand दे देन हमें कौन करिबा एबे ताकू से डीएनए जेतु वोलेटाइल इन नेचर अछि तो डीएनए काले एटु पळेबो उडिकी सेति बानी ताकू हमें ट्रांसफर कर देबा कोठे ट्रांसफर करिबा हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बा नाइलॉन क्लॉथ को तो ट्रांसफर कर देले ठीक अछि ए जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन अछि बा नाइलॉन क्लॉथ हे गला नाइलॉन हे गला बा नाइट्रोसेलुलोज हे गला एई जगह को ताकू हमें ट्रांसफर कर देबा एंड इट इज कॉल्ड एज सदर्न ट्रांसफर बोली कहै जाय ठीक अछि तापर हम बेसिकली कौन करना पेपर टावल रखी दीजिए देखो फास्ट रहला देखो दिस इज ट्रे विथ बफर तापर किए पड़ी ना स्पंज ट्रे अछि तापर किए अछि जेल अछि तापर किए अछि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन अछि और ता पाखे हम किछि वेट हिसाब रे पेपर टावल को हम छपेइबार अछि छपेइ पे हम कोन कर जेंति हम इमेजिन करो जो स्टैंप नहीं कि हम पेपर लगो ठीक अछि तुम कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम हैला प्रैक्टिकल एग्जाम हैला पर यू आर वेरीफाइड और यू हैव द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तुम सबमिट करछ बोली और स्टैंप सबमिटेड स्टैंप लागिवो और स्टैंप टी अछि तो लेटर हेड लागि छी ताको हमें नहीं कि इंक ट्रे रे बुड़ेइले आ बुड़े के आनी सेठी हम पेपर जोर चापी के रखिले एपर जहां लिखा है एटा लेखा रे छपी गले ठीक सेम हम कौन करछ ना जो ट्रे रे अब स्पंज थिला स्पंज ऊपर जेल थिला सेई जेल ऊपर हम गोटे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन टे रखिले बा गोटे नाइलॉन पेपर टे रखिकी ताहा पर हम गोटे हेवी वेट टी देले हेवी माने बेसी हेवी न कि भांगी जियो बोली जस्ट तक सइला बेला पेपर टावल तापर दिया कि इट वाज स्किलफुल काम मन रखियो जो सदर्न ट्रांसपोर्ट होची इट इज अ वेरी स्किलफुल वर्क ये नॉर्मल लोक माने करि परिबेनी स्किलफुल जो माने से टेक्निकल काम करिछन लैबोरेटरी काम करिछन सेही माने काम टी कर परिबे the thin film टाकू एपट को हम ट्रांसफर करले ब्लॉटिंग पेपर को नहीं आसिले छोटे काम थिला ट्रांसफरिंग बा जाको ब्लॉटिंग बोली कहूचे of the DNA fragments to a synthetic membrane synthetic माने human made synthetic membrane such as nitrocellulose और नाइलॉन मेम्ब्रेन को हम ट्रांसफर कर देले रीजन कोन काहे के हम ट्रांसफर करछे बिकॉज़ डीएनए इज वोलेटाइल और डीएनए जो वोलेटाइल अछि काले उड़ी जीवो काले पळेबो कोडे हम से बैंड पाइबा नै डीएनए ए वाला शिफ्ट हे गेला हम जानि परिबानी कोडे गला एठी से हम ट्रांसफर कर दूचे नाइलॉन शीट को नाइलॉन मेम्ब्रेन को क्लियर नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 वंस हमर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हे गला डीएनए हमर सेपरेट हे जाई छी इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस और the process होची कोन ना होता है हाइब्रिडाइजेशन એટલે माने व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन जदी मेंडलिज्म कथा मन पकेबी मेंडल हमर कहि दिले कैपिटल टी ये भी थिला प्योर और जेबे मानक भीतर मीटिंग हैला एठु जो F1 जनरेशन आसिला दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड हाइब्रिड माने जनकर पार्ट रे आउटे नुवा जिंसडी नेके हम इंट्रोड्यूस करछे दीटा इंडिविजुअल को डिफरेंट इंडिविजुअल को नेकी हमें आपस में मिसई के मर्ज करी नुवा पार्टी बनी छे
तो यूजुअली डीएनए आमर थाए डबल स्टैंडर्ड ए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए अछि ताकू एठी आमे कोन करले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट कर देले ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सहित आमे एबे काहा को मिसौचे ना एबे आउ गोटे स्ट्रैंड डीएनए टा मिसौचे दा ना होची प्रोब आ ना हे गला पी आर ओ बी ई और ये प्रोब जाई कोन करबो अटैच हे के डीएनए सहित मिसिला परे से सीक्वेंस हमें जानि छै और ये प्रोब टा पुन केमिति अछि ना वीएनटीआर प्रोब अछि ଆଉ ଏଲା ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଲେବଲଟି ଲାଗିଛି ମାନେ ବୁଝ କି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ସାମ୍ପଲ ଟେ ମିଳିଛି ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ସାମ୍ପଲ ଟି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଏଟା ସସ୍ପେକ୍ଟର ହେଇଥିବ ଏଟା ସେ କ୍ରିମିନାଲ ର ହେଇଥିବ ଏବେ କ୍ରିମିନାଲ କିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୋ ନଜରରେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ହେଇଥିବ ୟା ସିଏ ହେଇଥିବ ଇଦର ଏ ଅର ବି ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି କିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲିଟି ହେଇଥିବ तुम एबे कली कोन जो ब्लड सैंपल टी मिलिची कार सीक्वेंसिंग टी काढिली देन तार मो एबे डेन प्रोफाइलिंग करी के फिनोमिनल सीक्वेंस टी काढिची देन ताको देखे कि मो किसी प्रोब बनेची VNTR प्रोब आ वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट प्रोब अच्छा ब्लड टी जो ह्यूमन बीइंग को आसीची तो ता सहित से मैच करिवो सिंपल तो मोटी कली कोन से माने को जो ब्लड अछि तांकर जो डीएनए प्रोफाइलिंग करा हला सेठू बेस करी के मो किसी टैंडम रिपीट बने से टैंडेम रिपीट जहां से बाइंड करिवो ता से परफेक्टली मैच करिवो आ से टैंडेम रिपीट लागि जे रेडियो एक्टिव लेवल जहां को देखि के मो बैंड फॉर्मेशन करि परिबे आ जो बैंड बनिला से बैंड को देखि के मो क्लियर हे जेबी जहां सहित मैक्सिमम मैच करूची सी होची मोर क्रिमिनल बोली आ जहां से मैच करूनी सी ग्रुप में खलास हे जे ये होला प्रोसेस पूरा तो रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब आई हैव ये वीएनटीआर प्रोब र सीक्वेंस आई नो फॉर एग्जांपल भाबी दियो ये गोटे अननोन सैंपल टी अछि मो जानिनी आपे कोन अछि बोली ठीक अछि बट एई जगह रे गोटे छोटा पार्ट जाई बाइंड हे जाउची आ नाला वीएनटीआर प्रोब ये प्रोब रे कोन थिला ए प्रोब ताला नोन दिस इज अननोन दिस इज नोन नोन पाखर कोन थिला ए टी थिला यदि आ पाखरे ए टी अछि ताले ये जाई जहा सहित बाइंड करिछि से सीक्वेंस हम जानि देबी ए काइट बाइंड करथिबो टी पाखरे टी कोड बाइंड करथिबो ए पाखरे ए कोड बाइंड करथिबो टी पाखरे टी कोड बाइंड करथिबो ए पाखरे सिंपल त माने मोर पाखरे गोटिए नोन सीक्वेंस थिला सेही नोन सीक्वेंस जो जगह रे बाइंड कला तो बाय डिफॉल्ट मु तार सीक्वेंस जानि गली टी अछि बोली इज इट क्लियर बुझि पाइले कोन बाय हो जाउची डीएनए थिला मोर डबल स्टैंडर्ड देबे मो ताको अबिका रेस्ट्रिक्शन हेडा न्यूक्लियस दे मो कट करले से छोट छोट सेगमेंट डिवाइड हे गला देबे मो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करची एटा अल्काली प्रेजेंस रे डीएनए डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड हे गला एबे जो सिंगल स्ट्रैंड अछि डीएनए टी से आउ जनो सहित बाइंड करि परिबो तो कहा सहित बाइंड करिवो ना मु जो VNTR प्रोब पठेची वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट वाला प्रोब देची ये VNTR प्रोब ता जो जगह रे बाइंड करिवो से जो रेडियो एक्टिव टैग अछि बोली मो ताको क्लियरली जानि परिबी और जो जगह रे बाइंड करला मु जानि गली कि आ माने हु चाहिए सपोज गोटे जगह रे बहुत सारा माने गोटे सपोज मा एबे रोटी करियो जाउची जो भात करियो जाउचनी भात पई चावल नै चंदी ए चावल जे कि लुहा कोंडा मिस जाईची तो लुहा कोंडा मिस माने मु सेपरेट काम करी मु चुंबक नै आइली गोटे तो चुंबक तापर बुले देली मैग्नेट टी जे मैग्नेट तापर मु बुले देके एससीबी तो जो माने सब आयरन पार्टिकल अछनी आयरन डस्ट अछनी से मैग्नेट ऊपर चिपकी जीवे तनो जानि गली कि जदि लागु नांदी मैग्नेट धेरे ताल सेठी आयरन के नांदी ओडी गोडी बाली किछि थाई पारंदी जदि मैग्नेट चिपकु चंदी ता माने सेमान कोन आयरन हे गेले बोले मु जानि पारछि तो फुटेज देखि exactly I have known the sequence of this probe but I don't know about the sequence of the DNA the probe जाई जो जगह रे बाइंड करूछि I can know the sequence of the part clear तो radioactive VN type probe थिला मुदा जे ऐड करैली ताको वाश करिली आ VNTR probe जाई कोन करछि हाइब्रिडाइज कर देछि टू द DNA fragment DNA थिला सिंगल स्टैंडर्ड ताजे प्रोब जाई मिसी कि ताको डबल स्टैंडर्ड कर देछि एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन करला परे मोर कामटी मेन हे जाइछि the कहला place the nitrocellulose filter paper in a solution of radioactive labeled single stranded DNA please remember radioactive labeled single stranded DNA single stranded ssDNA ये भी अच्छे single stranded ये भी अच्छे single stranded DNA मोर single stranded already अच्छी तासरे probe भी जाई single stranded तो जो जगह probe के bind हबो सी हेगला मोर single double stranded हबो the DNA probe binds with the complementary sequence of the DNA fragment on the membrane
to form a hybridized DNA. Yes or no? जो मोर DNA डबल स्ट्रैंड तो सिंगल स्ट्रैंड ହେଇଥିଲା तो सिंगल स्ट्रैंड DNA रे गोटे प्रोब जाईकी बाइंड हबो और बाइंड हे कोन करछि ना अगेन गोटे डबल स्ट्रैंड हाइब्रिड DNA फॉर्मेशन करछि. इज इट क्लियर? पिला माने जानि पाइलो जोडा मु कहियो चाहछि. इज इट क्लियर टू यू? प्रियंका, राजलक्ष्मी, श्रुति, शुभलक्ष्मी, ओमेन हायर सेकेंडरी स्कूल पदमपुर. इज इट क्लियर टू यू पिला माने जो माने अच्छा क्लास रे? Okay, Priyanka, Shruti, Rajlakshmi, they are all saying yes, so we'll move ahead of the class. Now, step number 6 at the detection of the hybridized DNA by autoradiography. This step, this is the final step. Third step, this one is the final step. And in this final step, I'm going to now we need to detect kariba. How detect kariba? जो hybridized DNA mo pakke thila प्रोसेस ना होची ऑटो रेडियोग्राफी. जो प्रोसेस रे हमें देखिथिले कि डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इफ यू रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो थिला डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर in the year 1869 from the POS cell, and the name of the DNA was earlier known as nuclein. Yes, 1869 ने ଗୋଟେ साइंटिस्ट ଥିଲେ ତାଙ୍କ नाम होची फ्रेडरिक मिशर जे कि पॉस सेल रो डिस्कवर करथिले डीएनए ता ना देथिले न्यूक्लियस. बट परे जाई कि तार स्ट्रक्चर हम देखिथिले के डिस्कवर करथिले 1953 रे. साइंटिस्ट को नाम थिला कोन ना फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन. तो जो वाटसन और क्रिक माने डीएनए स्ट्रक्चर टी प्रपोज करथिले डबल हेलिकल मॉडल रे प्रपोज करथिले. ये जो डबल हेलिकल मॉडल से प्रपोज करथिले डाटा कोड पाइथिले कहा आधार हेतिला. It was produced by X-ray crystallography data by autoradiography data produced by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins at King's College in London. So London ର King's College रे जो साइंटिस्ट ଥିଲେ Rosalind Franklin and Maurice Wilkins ଏମାନଙ୍କ କାମର जो autoradiography data ଏମାନେ ବନେଇଥିଲେ X-ray crystallography data ବନେଇଥିଲେ ତାହାରି ଆଧାରରେ ଏମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିଥିଲେ କି DNA ଟା ହଉଛି ଡବଲ ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର. ଏଥିରେ ଆମେ ସେମିତି X-ray crystallography ବା autoradiography message ରେ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛେ कि जो DNA ଟେ ଅଛି X-ray film formation କରିକି ତା structure କି କୋଉଠି band ବନେଇବ ଆମେ ଏଠି ଦେଖି ପାଇଲେ. Then the autoradiogram gives an image in the form of dark and light band and it is called as DNA fingerprint. ଯେମିତି ଆମର X-ray କରା ହଉଛି. X-ray ମାନେ କଣ normal photo ହେଲା ଆମର external part କୁ ଉଠେଇ ପାରୁଛି. बट आमर बॉडी भितर जो स्केलेटल सिस्टम अच्छी जो बोन्स अच्छी सेठी कोड फ्रैक्चर टी हेची कोड छोटे अबिया लिगामेंट टी छिड़ी कोन भी जानिया पई कि हम कोन करछे ना एक्स-रे पास करछे बॉडी देखि और जब एक्स-रे पास करिकि सेठो अबिका आसे कि हम गोटे पिक्चर टी फॉर्मेशन करिकि दउची जो पिक्चर हम देखि जानि परछु कि ओके इंजरी को जगह रे हेची भाई. ठीक सेम टाइम ऑटो रेडियोग्राम बाटे हम जानि परियो डीएनए बैंड को जगह रे फॉर्मेशन होची. आ वंस हम बैंड जानि गेले हाइब्रिडाइज्ड डीएनए इज फोटोग्राफ्ड onto the X-ray film. What X-ray film upra amode identity pala asila. Now we have the DNA sample, DNA sequencing of the person A, person B, ଆଉ ଏପଟେ जो crime scene जो blood ଟି ମିଳିଥିଲା. तब से blood को ଆମେ जो से मैच करेबा जहां सहित से sequence मैच करियो से band टी मैच करिवो he or she will be the criminal. ये होची कथा. Last step कौन सी लाइट थी फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए प्रोफाइलिंग रे. DNA fingerprint differs in everyone except in monozygotic or identical twins. Identical twin केस रे टिका असुविधा हबो because identical twins माने कोन तमे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढिथिबो जे गोटे सिंगल स्पर्म टी गोटे सिंगल ओवम को फर्टिलाइज करेला गोटे सिंगल जाइगोट फॉर्मेशन हैला जाइगोट आगो जाई क्लीवेज करथांता क्लीवेज वन जाइगोट डिवाइड हेतांता सेठी होगा डिवाइड हेकी मोरुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला फॉर्मेशन करथांता एम्ब्रियो फॉर्मेशन दिखांता से जस्ट डिफिजन करबा पूर्व जाइगोट डिवाइड हेकी जोडा जाइगोट कन्वर्ट हे गला and both of the zygote से endometrium lining रे जाई कि implant हे कि embryo बने कि सेठी पे दीटा छुआ बनउछ से जो twins बनेले that is called as monozygotic twins. The twins arises from the single
जाई गुड सेमान केस रे टिके असुविधा हबो डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर करिवो नै बट आउ सब गुड से बे कोन करिवो डिफर कर डीएनए फिंगरप्रिंट the sensitivity of the technique can be increased by use of polymerase chain reaction that is called as PCR. The PCR stands for polymerase chain reaction माने होती कोन हमें एम्प्लीफिकेशन करे छै डीएनए को एम्प्लीफाई कर दे छै मल्टीप्लाई कर दे छै नंबर ऑफ कॉपीज बनाई दे छै अरे गोटे रे जरी किछि भूल आसी गला ताले आमे तो ठीक कला असुविधा हबो तब मल्टीपल कॉपीज बनाई दे छै एमती मन रखो कंप्यूटर स्कॉलरशिप फॉर्म टी अछि तो स्कॉलरशिप फॉर्म रे जो तमे फिल करे को जाउछो जरी किछि भी मिस्टेक होची त से फॉर्म टी पूरा बेकार ही जीवो तुम फॉर्म को फिल करे पूर्व तुम फॉर्म में मल्टीपल कॉपीज बनाई देछ तो मल्टीपल कॉपीज बने जेटी कोन हेले ना जदी गोटे जगह रे किछि भूल होची भी you can reject the paper and you can have another form and you can start filling and carefully fill करके तमे ठीक से करी पारिबो तो ये होची प्रोसेस polymerase chain reaction and therefore DNA from a single cell is enough for DNA fingerprinting yes or no for the crime scene में जो blood मिलती बा crime scene रो जो hair follicle टे मिलती तो पूरा छाड़ी की जीवनी को भी क्रिमिनल के चाहिबनी कि मोर एविडेंस छाड़ी की जाउची पुलिस आसु सीआईडी आसु सीबीआई आसु मते धरि होबनी ना ना तो सी तो केबे त सी सबले जे मिनिमल डैमेज करी कि जेबी कि किछि भी सुरक्षा छाड़ी एविडेंस छाड़ीबनी आ जदी लकीली हमु किछि गोटे सिंपल अमाउंट ऑफ माने बहुत छोटो अमाउंट ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ जिनसटे मिलिछि तो हम पाखरे पीसीआर बोले टेक्निक अछि जहा द्वारा हम मल्टीपल करि पारिबा माने बहुत मुश्किल ले गोटे फॉर्म मते मिलिछि and मो सांग माने भी अनइजन से फॉर्म मोड नबा पई कि तो सेमानो दबारे गोटे बाट होछि जेरॉक्स we can do duplicate photocopy xerox बनै दबा से जेम हम जे अल्प अमाउंट डीएनए मिलिछि and हमको मल्टीपल काम करबा अछि से डीएनए को नेकी so we can multiply the DNA we can amplify the DNA by the method called polymerase chain reaction PCR then the PCR and collect one we are having the DNA sample we have primers we have nucleotides हम समस्त को मिक्स करेले ये हला थर्मल साइक्लर मशीन ताको हम भर्ती करले आ पीसीआर साइकिल स्टार्ट करले तीनटा स्टेप रे काम हैला देन एट तीनटा स्टेप रे काम है कि फाइनली हमें देखले कोन ना डीएनए रो मल्टीपल कॉपी जो डीएनए बनि गेल डिटेल्स से पढिबो ए विषय रे केते बने इन द चैप्टर कॉल्ड चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से चैप्टर पढ़ला बने विल गेट टू नो इन डिटेल व्हाट इज पीसीआर who discovered PCR साइंटिस्ट का नाम होचे कैरी मुलिस पीसीआर हमें को एंजाइम को यूज करछे ना डीएनए पॉलीमरेज what is the name of the DNA polymerase na Taq polymerase thermus aquaticus polymerase thermus aquaticus गोटे कोन ये गोटे आर्की बैक्टीरिया ये हो जे थर्मोएसिडोफाइल्स एमाने को जगह देखा जानती ना दे आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स क्लियर तो इन द क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लूप ऑफ क्वेश्चंस बने पारिबो so you need to know in very depth कोन जिंस अछि पीसीआर कोन कोठी यूज करा हुए काहे के यूज करा हुए कोठु बनेला के डिस्कवर करले जब तुम मल्टीपल क्वेश्चन बने परिबो रेज करि परिबो देन द आंसर पाइबो यू विल हैव अ सैटिस्फैक्शन कि आदि मु किछि जिंस पढिली आदि गोटे नुवा जिंसटे जानिली एंड आई एम वे अहेड फ्रॉम अदर्स अन्य मानकटो भीड़ रो गोटे कदम आगे रे अछि देन तो से वाला जिंस प्रिपरेशन नंबर से वाला हबा दरकार क्लियर नेक्स्ट गोटे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एट अ ग्लैंस माने कंप्लीट पार्ट को हम गोटे स्लाइड रे सारीगा क्लियर समस्त जो माने भी अच्छा आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन आको भल से देखो क्विकली एटा तुम बुझी परिबो पार्टिसिपेंट्स हम धीरे धीरे कमी गलेनी आगो किछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम करथे आंदे अच्छा जो माने भी अच्छा से माने क्लियरफुली सुनो यदि किछ डाउट अछि इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स ये समस्त बुझी परलो एनी डाउट पिला माने ओके प्रियंका done okay the isolation of DNA first of all you need to isolate the DNA from that sample so sample हमको मिल जाए the sample can be again the sample can be saliva the sample can be any hair follicle the sample can be any semen particle the sample can be of anything any tissue any organ रो किसी part cell रो किसी part तब हमें DNA को isolate कर ले our first work is to isolate the DNA our first काम है DNA को isolate करिवा okay श्रुति लेट्स आइसोलेट डीएनए हम आइसोलेट कर देले आइसोलेट कर सरला परे
we'll quickly move to the number 2, which is called as digestion of DNA by restriction endonuclease enzyme. So we know digestion ଆମେ କେମିତି କରିବା କାହାକୁ use କରିକି restriction endonuclease enzyme, that is also called as molecular seizure. A molecular seizure use करके digestion कले. Then separation of DNA fragment by using gel electrophoresis. ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଠି DNA fragment को separate କରୁଛे କୋ basis ରେ ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये गोटे टेक्नोलॉजी अच्छी, ये गोटे मेकानिज्म टे अच्छी जोटी हमें नेगेटिवली स्ट्रैंड डीएनए को ताकर चार्ज आउ ताकर मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंगली हम तो सेपरेट करूचे. તમે डायग्राम देखि साइमल्टेनियसली से बुझी चलो. दिस इज अ ब्लड सैंपल. ये ब्लड सैंपल में हमने स्टेप नंबर 1 डीएनए आइसोलेट कले. डीएनए एमती सूता बलिया गुडे गाडे डीएनए थाए. देन ये जो एते बड़ डीएनए अछि बेसिकली 2.2 मीटर डीएनए अछि ताको हमें मॉलिक्यूलर सीजर द्वारा बा मॉलिक्यूलर सीजर द्वारा ताको हमें कॉइंच रे काटी देले और काटी के छोटे छोटे कुनी कुनी पार्ट रे डिवाइड कर देले, सेगमेंट रे हमें ताको डिवाइड कर देले. नाउ ए जो डीएनए अछि ये तो सबने अलाइन है कि नांती, ये सब अरेंज है कि नांती, ताको हमें नहीं गले कोन ना ताको हमें पकड़ देले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे. अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोन होय माने ना तांकर लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट माने ऊपर रहिबे थोड़ा बड़ अछंती और शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट माने तळे रहिबे तळु पळे आसीबे. यस और नो, कारण जी जते छोट अछि से आगु जीव स्मॉलर द पार्टिकल the faster it will move, the longer it will travel, and larger the particle, by bigger the particle, the slowly it will move and the smaller distance it will cover. Now once step number 2 हमर सरी गला, we'll come to the step number 3. हमें डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कर देले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर दे. Then as well the fourth number step 4, that is called as transferring DNA fragments to synthetic membranes. You all know DNA is volatile in nature. डीएनए जदि अबिका से जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डीएनए जदि मेल्ट हे गला से जगह रही गला तो हम सब परिश्रम वृथा ही जीव. तो हमें कौन करे पड़ो डीएनए को ट्रांसफर कर देवा पड़ियो. ट्रांसफर हमें कोठी करे फ्रैगमेंट को ना सिंथेटिक मेम्ब्रेन जेमति कि नाइलॉन हे गला, नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ए पार्ट को हमको डीएनए को ट्रांसफर कर देबार अछि. And once we transfer our DNA to the nylon membrane, nitrocellulose membrane, then the step number 5 comes, that is called as hybridization. Hybridization माने हला कोन हमें डीएनए को हाइब्रिड करू छै. हाइब्रिड मींस कोन, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें सेपरेट करला बेले ताको हमें डिवाइड कर दै सिंगल स्ट्रैंड को. एंड अगेन हमें एठे अप्लाई करछे VNTR प्रोब. what do you mean by VNTR probe? Labeled VNTR probe माने कोन, probe होची गोटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टी. probe गोटे कोन गला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ए डीएनए टा केमता डीएनए ना वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट वाला डीएनए. किछि भी गोटे वेरिएबल नंबर टैंडेम रिपीट हम पठेछे ATGC ATTA GCTA GGCC एमती टैंडेम रिपीट हमें देखे. ये जाइंकी जो जगह रे बाइंड हेबे हमहु से जगह लोकेशन बना पड़े जीव. थैंक यू ना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. रिमेंबर एडविन चार्गाफ, the base pairing rule they the scientist Edwin Chargaff in the year 1950 has come with a base equivalence rule or base pairing rule, where he had told that always adenine bind with thymine by making 2 hydrogen bond and guanine binds with cytosine by making 3 hydrogen bond and vice versa. Yes or no? A will pair with T, G will pair with C and vice versa. Means T will pair with A and C will pair with G. तो ये जो प्रोसेस टी चले ची ये प्रोसेस रे कौन देखिले always purine comes opposite to pyrimidine. That's why purine is equal to pyrimidine. जति की purine थिबो जति की pyrimidine थिबो आको हम बेस इक्विवेलेंस रूल बोली कहले. तो एक complementary base pair चक्कर रे if we know the labeling of one strand of DNA, it is very easy to find out the labeling of the another strand of the DNA. तो हाइब्रिड डीएनए जो गोटे स्ट्रैंड हमु जणा अछि अन्य स्ट्रैंड हम आराम से पाइ जीवा. यदि आ पाखे AT अछि तो ता पाखे TA थिबो. आ पाखे GCCG अछि ता पाखे CGGC थिबो. Then this is called as complementary base pairing. And the last step होला कोन एठी ना detection of hybridization DNA by autoradiography. Once we do all those things, last with हम quickly summarize करके ऑटो रेडियोग्राफी करिबा एंड से आंसर टी हमो मिली गेला डीएनए स्ट्रैंड रो सीक्वेंस में जानि गले. देन the step 1, step 2, step 3, then as step 4, step 5 and final detection of using the x-ray crystallography करके बे x-ray ऑटो रेडियोग्राफी करके हम आंसर हमरो पाइ गले. Then this is the entire scenario.
Yes. Next time Abhika are the application part. So till now we have started what is DNA fingerprinting, who discovered DNA fingerprinting, then what are the methodology of DNA fingerprinting, what is the procedure step by step of DNA fingerprinting, and now it's time to know about the applications of DNA fingerprinting. The DNA fingerprinting application कौन अच्छी और कोई जगह पे वो यूज करते हैं ଯେମିତି ଆସିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କି forensic problems ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ନା forensic tool to solve paternity rape murder ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ DNA finger printing କୁ done तो ଏବେ forensic tools ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କି paternity test ହେଇଗଲା rape case ରେ murderer case ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ୟୁଜ କରୁଛେ second for the diagnosis of genetic diseases ଯଦି କିଛି genetic disease ଅଛି ठीक ଅଛି ତ ବଡ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ କି ଦେଖ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟି ଅଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦ୍ୟାନ କ୍ୟୁର yes or no ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦ୍ୟାନ କ୍ୟୁର ବଟ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କରିବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା until and unless you know what is the problem, how can you go to prevent it? So first you need to know it. ये एमती की जिनसे ही ची बोली तो जेनेटिक डिजीज जो थाए ताको हमें अगर जानिबा अगर डायग्नोसिस करिबा then only we can go for the solution until and unless you know the process we know the disease we cannot predict it or we cannot make solution for it ठीक है जी तो for the diagnosis of genetic diseases third to determine phylogenetic status of animal very important हमें पढ़िथे biological classification in biological classification हमें पढ़ुଥିଲେ कोन different organisms को classify करूଥିଲେ तांकर similarities dissimilarities if someone will ask you dear students what is classification what do you mean by classification the answer तुम्हें कौन दबो ना it is a scientific procedure. It is a scientific procedure of arranging different organisms into various groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and finally making a taxonomical hierarchy. So in simple meaning, आर हम जो ओडिया जिला meaning देखियो कौन हम करछे classification कौन करथिले ना हम किछ organism मान को निले and तांको arrange करिबा start कले केमिति arrange कले ना into some group into some subgroup आको हम divide कले ये division ना basis कौन थिला को basis रे divide करछे on the basis of the similarities as well as the dissimilarities और हम similarities समान असमान सब देखेंगे फाइनली हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनेले जेमति कि फर्स्ट सिला किंगडम तापर सिला फाइलम और डिवीजन देन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ए वाला डिवाइड करले जेमति मत पचरा अब हम घर कोठी फर्स्ट ऑफ ऑल मु कहबी मु पृथ्वी पृष्ठ रे वास करछि पृथ्वी रा को जगह ना एशिया महादेश एशिया कॉन्टिनेंट एशिया वासी इंडिया एज माय कंट्री इंडिया वासी ओडिसा एज माय स्टेट ओडिसा रो सीधा आसीबो अबे कटक माय डिस्ट्रिक्ट देन कटक रो फुल मु घर एड्रेस आसीबो देन ठीक से बोला टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखि आसीछि ठीक से बोला जिनसटे क्लासिफिकेशन कला बेले समटाइम वी नीड टू स्टडी अबाउट द फाइलोजेनेटिक स्टेटस एंड व्हाट डू मीन बाय फाइलोजेनेटिक मींस द रिलेशन बिटवीन द इवोल्यूशन रिलेशन बिटवीन द एंसेस्टर वी द ह्यूमन बीइंग हमर एंसेस्टर किए थिले हमर तांको सहित कोन संपर्क थिला केमिति हमें तांको सहित जड़ित एई सब क्वेश्चन आंसर पाए ପାଇଁ कि वी नीड टू डी फाइलोजेनेटिक स्टडी and the phylogenetic study point we need to know about DNA fingerprinting. Okay, our DNA fingerprinting role एठी भी देखा मिलिबो and then ଆସିला to determine population and genetic diversities जो diversity हमें देखुचे ये सुनो इंडिया रे diversity is unit in diversity हमें कहउचे हमें कितने diverse होते we all are Indians if you go to Punjab Haryana you will find the normal height of the people बहुत बड़ा बड़ा थियो देखने का लोक मन सब होछंती ठीक अछि having a mustache beard having a turban in their head Punjabis Sikhs so तांकर appearance अलग आसीबो if you move from north to northeast if you go to Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland सेपट जरी जगह हो जिवो सेठी जो लोगन appearance टिके अलग आसीबो then सेठी जो तमे पळे आसीबो ईस्टर्न पार्ट को पळे आसीबो like West Bengal like Bihar like Odisha एपट लोगन झारखंड नाका लोग appearance अलग आसीबो if you quickly move to the southern states of the India, the southern part of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, city लोगों का appearance टिक अलग आसीबो
देन सेटा तुम टिके मूव कर दे वेस्ट साइड को जाउछ महाराष्ट्र बा सेपटे पुणे महाराष्ट्र सेपटे एरिया तुम जाउछ गोवा जाउछ महाराष्ट्र जाउछ देन सेई पटे केसले गुजरात रे राजस्थान रे सेटिका लोक को अपीयरेंस टिके अलगा आसी देन तो हम जत्ते जत्ते जगह जिबा सेते जे अपीयरेंस पाइबा सेते कल्चर सेते डिफरेंस आसीबो तो से डिफरेंस जो अछि जो डाइवर्सिटी अछि से पॉपुलेशन को नहीं पॉपुलेशन डाइवर्सिटी अछि ताकू भी स्टडी करिया पाई कि हम यूज करछे कागर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग so basically DNA fingerprinting the application is not limited to only paternity test only identification of the murderer or the rapist but it is also used in various phylogenetic studies and also to find out the diversities in the population and in the genetics okay so for DNA fingerprinting the alga alga use be achieved these are the application of DNA fingerprinting now see, I'm going to case study ये देखिए case study कौन से here is the mother here is the child and एठी तीनटा suspect अछि ये बापा हबो बोली देखो मां तो जने टेक्निकली हबो child तो जने ही अछि से child रो असली बापा के who is the original father अब एठी हम different different fragment देइछे ए पार्टी भलसे देखो important पार्टी एटा अछि देन ओके देखो मदर एठी ଗୋଟେ बैंड अछि child रो ଗୋଟେ बैंड अछि मदर बैंड एटा आसे मैच करछि एंड एपटे एई बैंड ता भी आसे तो मैच करछि तमे देखि परछु एठी जदि कलर चेंज करी कहिबी एठी को कलर नले सुविधा हबो ओके ग्रीन कलर ता नै छै एठी देखो एठी गोटे बैंड ये बैंड आसे तो मैच करला ए बैंड टी आसे तो मैच करला तने एठी गोटे बैंड टी आसे तो मैच करला बाकी चाइल्ड पाखरे माठ तीनटा बैंड आसे मैच करछि पण बापा तो किछि बैंड आस्तिबो तो बापार बैंड कोटा कोटा मैच करला दिस वन इज मैचिंग विथ दिस these two are matched with these two and the last one is matched with the last one clear तो देखि पाइलो एठी solving paternity using DNA fingerprinting and your person one is likely to be the father of the child a person one सहित ये child ର similarities बहुत सारा अछि in comparison to person 2 रे भी अछि देखो एई पार्ट ता ही केवल मैच करछि आ सहित डन आउ गोटे ए सेकंड पार्ट मैच करछि दीटा मैक्सिमम मैच आसिले आउ तो किछ मैच करन ता सहित क्लियर किंतु पर्सन 3 देखिबा एटी किछि एटी गोटे मैच करछि ओनली दिस वन पर्सन 3 रो ओनली दिस वन मैच करछि तो पर्सन 3 रो गोटे मैच करछि पर्सन 2 रो दीटा मैच करछि हेले पर्सन 1 रो 1 2 3 4 मैक्सिमम मैच करछि आ जोटे मैक्सिमम रिजल्ट आसिला he is identified as the biological father of this child clear one देखिबो DNA fingerprinting इते रिलेवेंट अछि कि सपोज DNA fingerprinting करे स्वयं ब्रह्मा आसी कि भी जदि कहिबे ब्रह्मा यू नो ब्रह्मा इज बीइंग द क्रिएटर ब्रह्मा आसी कहिबे कि ना ना ये बापा नु सीता बापा अगेन हमर जज साहब जी अछने से सुनिबे नै ब्रह्मा करे बिकॉज़ DNA fingerprinting इज दैट मच रिलेवेंट तापर एते इंपोर्टेंट अछि जिंसर DNA fingerprinting रिपोर्ट जहां कहबो that is the final one clear okay the forensic tool to solve paternity rape murder etc for the diagnosis of genetic diseases etc determine the phylogenetic status of animals and determine the population and genetic diversity ये सब काम हमें जानते तो गोटे केस स्टडी नै कि देखिले कि हमर जो चाइल्ड अछि आ एपटे चाइल्ड रो तीनटा फादर भीतर अक्यूज्ड भीतर हमें आइडेंटिफाई करि पाइले कि फादर नंबर 1 जो अछि पर्सन नंबर 1 he is the original father of this child now next ଆଉ କୋଉଟା ଦେଖି ପାରୁଛ ଦେଖ different repeat ସବୁ ଅଛି ଏଟା ଏ ଯୋଉ picture ଟେ ତମର book ରେ ଅଛି NCERT book ରେ diagram ଟେ ଦେଇଛି solving a crime with the help of DNA fingerprint ତମେ କେମିତି solve କରছি ଦେଖ ଏଠି ତ ଏଠି ଦେଖିଲ DNA from individual A DNA from individual B ଆମେ ଯୋଉଟା DNA ଟା ଏଠି ଆଣିଲେ ତ आपे क्रोमोसोम नंबर 7 क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 16 ना हमें देखिजे कौन कौन रिपीट अछि एठी जो सी रे जो डायग्राम टे देछि सी होछि कि एठी ना सी होछि हमर डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन रो हम गोटे डीएनए टे मिलेछि क्राइम सीन ने आ जोठी हमें नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडेम रिपीट क्रोमोसोम नंबर 7 क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 16 ना टैंडेम रिपीट हमें बनेछि एबे देखो ये टैंडेम रिपीट सी सहित ए और बी रो मैक्सिमम किए मैच करछि देखो बोलसे ए और बी नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडेम रिपीट रे ए और बी रो मैक्सिमम को पार्ट मैच करछि माने सी सहित ए मैच करछि ना सी सहित बी मैच करछि किए मैच करछि
Answer me in the chat box. C सहित A मैच करिवो ना C सहित B मैच करिवो मैक्सिमम के मैच करूची कौन हो आंसर श्रुति प्रियंका यस बी राइट ठीक है ना कौन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओवर है कौन प्रियंका एंड श्रुति ठीक आंसर देने तो ये बी टा बेसी भल से मैच करची सी सहित तो क्राइम सीन नो हम जो पैटर्न मिली जो पैटर्न टा मिली डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड बी हम एट सॉल्व कर पाइले कि एठ जो क्राइम सीन सैंपल टी बिलोंग्स टू पर्सन बी एबे से पर्सन बी से काहे की जाइतिला कोन पई जाइतिला से मर्डर करछि ना न करछि ये तो जज साहब कहबे बट एबे हम जानि गेला तीन जिंस सॉल्व हो गेला कि पर्सन बी से जगह प्रेजेंट थिला बोली देन तापर हम डीएनए प्रोफाइलिंग को गोटे सिंगल पेज रे कवर करिवा आ समराइज करछि सरीवा प्रोसेस को दैट इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ टू इंडिविजुअल इट इज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी यू नो ऑल दोस थिंग्स then basis of DNA fingerprinting that DNA carries non-coding repeated sequences called as variable number tandem repeat VNTR and VNTR is specific in each person और कौन सा स्टेप थिला सदन प्रोटीन का स्टेप कौन थिला ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रांसफरिंग of blotting of DNA fragments to nitrocellulose or nylon membrane hybridization by radioactive VNTR probe detection of hybridized DNA by autoradiography each like 6टा step and then the application code ଅଛି na forensic tool to solve paternity rape murder etc for the diagnosis of genetic diseases to determine phylogenetic status of animal the single page re ame entire part को briefly discuss करदेली कि what is DNA fingerprinting तार basis कौन अछि तार steps कौन अछि और तार application कौन अछि this is the entire scenario clear now it's time for to solve any question which is not correct statement about human genome you can read the question from here and then you can answer accordingly which is not the correct statement about human genome पूरा statement correct नहीं किसी कहला कि largest known human gene is dystrophin on X chromosome contains 2.4 million bases ठीक अछि second 99.9% nucleotide bases are identical in all people ठीक अछि about 1.4 million locations where single base DNA differences SNPs occur in humans ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲା Y chromosome has most gene ଏଇଠି ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା yes or no Y chromosome ରେ ସବୁଠୁ କମ ଅଛି ଆଉ chromosome 1 ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି yes chat box ରେ आंसर ଦେଇ ଦିଅ ଶ୍ରୁତି एंड प्रियंका जो माने भी अଛ जानि पाइलो chromosome जो ऑप्शन नंबर डी अछि इट इज इनकरेक्ट बिकॉज़ chromosome Y जो थिला ता पाखे थिला 231 टा जीन आ chromosome 1 जो थिला ता पाखे थिला 2968 नंबर ऑफ जीन तो ऑप्शन डी टा है ठीक है यस और नो आंसर कौन आसिला यस श्रुति एकाम्र हायर सेकेंडरी स्कूल राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट वन then human genome project is closely associated with dash information technology bioinformatics biophysics bionomics simple option number b correct option number b yes priyanka option number b is the correct one bioinformatics the basis of DNA fingerprinting is dash the double helix errors in the base sequence Shruti also correct answer errors in base sequence polymorphism in sequence DNA replication DNA coiling वो basis रे करछे हम एठी errors टा कोठी आसुचे हमर एठी yes option b is the option c yes option c is the correct answer polymorphism in the sequence size of VNTR varies from VNTR size टा केते रु केते vary करछला मने पडुची option d रे थला right answer श्रुति ठीक अच्छे आंसर सी ठीक अच्छे बट नेक्स्ट क्वेश्चन ना नो प्रियंका ऑप्शन सी नहीं 0.1 to 20 के भी होगा ये श्रुति राइट आंसर आंसर इज
Option D, 0.1 to 20 kb. Size of V and tear varies from 0.1 to 20 kb. Last question. Which one is not involved in DNA fingerprinting? Who part of DNA fingerprinting is involved here? Like digestion of DNA by external nucleus. ठीक अच्छी. Gel electrophoresis भी ହେଇଛି. Blotting of synthetic membrane भी ହେଇଛି. ଆଉ auto radiography भी ହେଇଛି. କୋଉଟା ହେଇନାହିଁ? କୋଉ ଜିନିଷଟି ହେଇନି? ନା ଆମର reverse transcription of hybridized DNA. The reverse transcription ହେଇନି. The correct answer is option D. Yes, Shruti and Priyanka both have given correct answer. Many congratulations to all of you. It means तुमने class starting रो end जाएंगे attend करिଛ, जिनसो बुझिଛ, answer ଦେଇଛ, which will boost your confidence and my blessings are with you. बढ़िया से हबे एग्जाम तमरो आगो जो काउंसिल एग्जाम तमे दबो आगो जो तमे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दबो आ जो भी क्वेश्चन मु तुमो प्रिपेयर करैली क्वेश्चन सब नॉर्मल क्वेश्चन नो एंट्रेंस रे क्वेश्चन आसीची नीट रो प्रीवियस क्वेश्चन तमे जानि परलो गोटे पाठ को पढिला परे ताको हम केमती इनकलकेट करि परिबा केमते हम जानि परिबा व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट योर मोरल्स डन ओके And hereby, thank you so much for your kind attention. And we'll definitely meet again in the next month with a new topic, a freshly new topic or new chapter. And hereby, I am ending molecular basis of inheritance chapter. I hope तुम्हें बुझिपारिथिबो और जल्दी भी किसी डाउट रहुची जो पार्ट तमे जानि पारनो जो पार्ट तमे रिपीट हवार अछि काइंडली concern with your respective teachers in your higher secondary school by your nodal officer and let us know to DHC office. Thank you once again for joining the class. Have a good day.